Hello guys, welcome to our free dental guide campaign. We are AI Medical Dental Academy, providing you guidance and support for passing first to final year BDS exams. It's a project where you have to gain easy knowledge about dental subjects. It's not mere mugging up, but also in your clinical aspect of life, it will be very useful. How to differentiate, how to diagnose all the disease, what to decide, how to treat all the diseases. Oral pathology is a subject where you have to day to day indulge in the patients as well as your clinical treatment plan. So today's topic is about odontogenic tumors. In today's lecture, we will be discussing about ameloblastoma, pinbox tumor, and adenomatoid odontogenic tumor. Now, just names are important because from these three, either two will be asked. Okay. First of all, we will be discussing ameloblastoma. Pinbox tumor, aortic, and odontoma. Okay, so this is very important because out of these 3 to 4, 2 or 3 questions will be asked. Okay, so we will not waste our time. The first question is of classify odontogenic tumors. Describe pathogenesis, histopathology, clinical features, radiographic appearance of ameloblastoma. Okay, so as I mentioned you that all classifications you should know of cyst, tumor, bone tumors, etc. Why? Because when they ask such question, if it is of 7 marks, for example, this is of 7 marks, so 3 marks will be of the classification. Okay. Now, if you don't write the classification properly, half of the marks are gone. Now, what is the aim or what is the purpose of writing remaining thing if your half of the marks are not being with you? Okay, so in this way, don't forget this thing. Write all classifications separately in one book and try to revise it daily. Okay, now first of all, according to WHO, what is the classification? So first of all, they're telling that various names they have given. Okay, if you are unable to remember all this, you can write at least 2 or 3. But this is important that WHO has given it in 2017. Okay, now they have also classified on the basis of benign. Okay, in case of benign, we have ameloblastoma. Okay, in case of benign epithelial odontogenic tumors, we have ameloblastoma. Okay, the ameloblastoma is an important question and it is asked for 7 marks. Now, ameloblastoma are of various types. Ameloblastoma, which is of unicystic type, extra-osseous type, metastasizing. Okay, then various tumors also will be there apart from ameloblastoma in this classification. Okay, now other pattern for these tumors according to WHO is benign mixed epithelial and mesenchymal odontogenic tumors. Okay, in this we have ameloblastoma, primordial odontogenic tumor, odontoma. Okay, so in short, what we can do is
What WHO gave this classification is, first of all, they have given this odontogenic carcinomas. Okay, first thing they have given is odontogenic carcinomas. Okay, in odontogenic carcinoma, we have all these things up to here. Now they have given this other type is odontogenic carcinosarcoma. Third type is odontogenic sarcoma. Okay. Now fourth type is benign tumor or benign epithelial, and other type is benign mixed epithelial and mesenchymal. So here you have to remember this classification according to WHO. Odontogenic carcinomas, odontogenic carcinoma sarcoma, then odontogenic sarcoma, benign tumors of epithelial plus mesenchymal. This is the classification of WHO. Okay. Last, benign mesenchymal. Okay. Now these tumors may derive from, during development, all these are the parts of tooth development: cell rest of enamel organ, epithelium of odontogenic cyst, disturbance of developing enamel organ, basal cell surface of epithelium of jaw. Okay. So here in ameloblastoma, we will have basal cell surface will be involved. Now histopathologically, ameloblastoma histopathology. What will be the histopathology? They will be having different types: follicular, plexiform, acanthomatous, and granular. Okay, in various different group. There will be different types. There is also one desmoplastic type. So here they have not given desmoplastic, but in Schaeffer they have mentioned this. So whenever you write this thing, you have to write reference also. For example, according to Schaeffer, these are the types. Here you have to learn only 4 distinct patterns. So as you know that whenever we have such pattern, what we do in our notes is we create tables. This is follicular, this is plexiform, this is acanthomatous, and this is granular. Now whatever points we discuss here, you have to write one by one in your notes, and after that you have to revise. Now in follicular type, neoplastic odontogenic epithelial cells, okay, they will proliferate in form of discrete follicles and islands. Okay, here in follicle case, they will be spreading in follicles and islands. This is the type. In the connective tissue stroma. Now each follicle like structure is bordered on periphery by single layer of tall columnar cells resembling ameloblast like cells. Okay, so this is a story. What these people are doing, they are telling you story. You have to draw this diagram. They are telling that there are numerous islands of cells. Okay, this is one cell island, this is another cell island, this is third cell island. Okay, so this is first sentence. Second sentence is, they are bordered on periphery by single layer of tall columnar cells. So here they will be bordered by
tall columnar cell. Okay, so this way you have to draw the diagram, and this way you can remember also. Now cells located at the center of follicle, they are loosely arranged and resemble stellate reticulum. So this is a follicle, and cells arranged at the center, they will be loosely arranged and it will resemble stellate reticulum. Okay, sometimes we find that due to the space between the cells, microcyst is found. Okay, so now how to make it easy, I'm explaining you. First of all, they are telling you that in follicular type we have cell islands. Okay, on this border we have tall columnar cells, and in the between we have cyst type pattern, microcyst. Here they are tall columnar cells, and here they are follicles or islands. So whenever you explain follicular ameloblastoma, instead of words, you draw this diagram only. Okay, then it will be easy for you to remember and you will get good marks. Okay, now we have plexiform type, second type. Here peripheral layer of cells are tall columnar and they resemble ameloblast. Cells in the center resemble stellate reticulum, and in the intervening connective tissue stroma we find cystification areas. Okay, instead of follicles or islands, this is the only difference between follicular and plexiform. Instead of follicles or islands we have cystic areas and cells are minimum. In case of acanthamatous, acanthus means thickening of the epithelium. Here cells occupying the portion of stellate reticulum undergo squamous metaplasia, sometimes with the keratin formation. Okay, so what you will draw here, you will draw these tall columnar cells periphery, and here in the center you will write squamous metaplasia, then keratin formation. Okay, so what I mean is you only draw diagrams when you explain this. Your one page, draw one diagram and explain on the different parts, like keratin pearls are found, epithelial keratins are found, then calcification areas will be found. Okay, sometimes we may confuse this with squamous cell carcinoma. Okay, now fourth type is granular type. In this we will have same like stellate reticulum cell, and it takes granular eosinophilic appearance. Only this is the difference. Now clinical features. Okay, these are the types. Clinical features. So this is age. Second, third, fourth, fifth decade of life. Proper age is around 32 years. We have this. Males are affected more than females. Then sight. You write only mandible. Okay, in the molar ramus area. This ameloblastoma, in the most of the cases, these are the words you should not write. Only in the mandible, molar ramus area. Now clinically, what does clinically ameloblastoma represent, or what is the appearance in the patient? The slow enlarging, painless, ovoid,
and fusiform bony hard swelling of the jaw. Patient will think that there is some swelling. When you go for palpation, it is bony hard. Okay, there is no pain and it is slowly enlarging. Size is gradually increasing. In largest cases or in severe cases, there will be pain, paresthesia. Paresthesia means ખોટું લાગી જવું. Due to the nerve damage, patient will not feel pain, touch, temperature, proprioception, or temporary loss of sensation. And mobility of regional teeth. Where there is ameloblastoma, it will tend to displace the teeth, and where there is involvement of teeth, there will be chances of its mobility. Okay, sometimes in larger cases, if the ameloblastoma is larger, there will be fracture of the jaw or fracture of the bone. Now, radiologic appearance. In the initial stages, we have bone destruction. Okay, so bone, in the bone we find honeycomb appearance. Where there is destruction, the trademark of ameloblastoma is honeycomb appearance. You can see here. So this is the only thing you have to write. And whenever you write any radiologic feature, it is common only. It will be smooth, well-defined scalloped border. Okay, hyperostotic borders will be there. Many times ameloblastoma is not unilocular, it is multilocular. So these honeycombs will be found in various regions in the jaw. Okay, presence of bony expansion and thinning of cortical plates. If the ameloblastoma is in the mandible, it will tend to expand the bone, and so the cortical plates will be thinning and bone will be expanded. So the bone shape will be like this. Here there will be hollow thing and cortical plates will be very thin. So they are telling that it is like eggshell cracking. Extensive root resorption will be seen in the lesional area. Okay, so all these features you have to explain regarding ameloblastoma. What you will do is, see, this is mandible. So suppose ameloblastoma is involved here. So our clinical features, first they have discussed about decade, in which decade of life they are found, then age group, then no pain, sometimes paresthesia is there. Okay, but in severe cases, if the size is large, they will tend to fracture the mandible here. So this is called pathologic fracture. Okay, if nerve is involved, sensation of nerve will be lost. When there is an expansion, they will expand in such a way that mandible will be hollow from inside, and from outside it will expand and it will be seem like eggshell cracking, thinning of the cortical plates, and in the radiograph we think that it is like egg and hollow from inside. Here there will be thin shell cracking, here there will be hollow part or radiolucent part. So in this way you have to write clinical features. Now we are describing it radiologic features. So it is of pattern of bone destruction as well as bone
formation. Okay. So in the early stages of bone destruction, they have hyperostotic borders. Outline of margin of lesion is smooth, well defined, scalloped and is corticated. Okay. Honeycomb appearance will be seen in the radiographic feature. Bone expansion will be there, eggshell cracking will be there. Tooth involved will be mobile as well as root resorption of the tooth involved will be there. Now what is the treatment? Treatment is like we discussed treatment of cyst, enucleation or marsupialization. Here complete removal is necessary by simple enucleation, or sometimes we can go for curettage also. Okay, and end block resection, complete resection of the this tumor, complete removal of the tumor. Marginal resection is the most widely used treatment. What these people do is only the margins are removed, rest of the part are is remained in the cavity or bone, but there are chances that recurrence is there. So whenever they find this disorder, try to remove it completely. Okay, so ameloblastoma is an important question. You have to go through this, prepare notes. Other treatment available are some surgeons adopt conservative approach. They remove tumor by peripheral ostectomy. The peripheral bone is removed and then they remove the tumor. Sometimes other surgeons advocate that margin of resection should be 1.1 to 1.5 centimeter post radiographic limits of tumor. ना ये लोग ऐसा बता रहे हैं जब आप निकालते हो ना तो आप थोड़ा ज्यादा निकाल दो, रेडियोग्राफ में जो दिखता है ना उससे 1 to 1.5 मिलीमीटर ज्यादा निकाल दो. ठीक है, तो एमिलोब्लास्टोमा हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा. पहले तो आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए. WHO ने दिया है, बहुत सारे टाइप्स है. ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमास, ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमा सार्कोमास, फिर ओडोंटोजेनिक सार्कोमास, फिर बेनिन वाले ट्यूमर है एपिथेलियल वाले, बेनिन वाले ट्यूमर है एपिथेलियल प्लस मेसेनकाइमल और बेनिन वाले ट्यूमर है मेसेनकाइमल के साथ. ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया. फिर आता है, क्या आता है उसके टाइप्स. ठीक है, तो 4 टाइप्स हमको दिखाए, फॉलिकुलर, प्लेक्सिफॉर्म, एक्एंथोटोमस एंड ग्रैन्युलोमेटस. ठीक है, तो हमने फॉलिक्यूल में देखा कि यहाँ छोटे छोटे आइलैंड होंगे, फॉलिकल्स में होंगे, बार्टोल कॉलमर सेल्स होंगे, अंदर सिस्ट जैसा होगा. फिर प्लेक्सिफॉर्म में हमने देखा कि जो सेल्स होंगे अंदर के उसमें बीच में ही खाली चेंज आएगा, बाकी सब बाहर चेंज आएगा. एक्एंथोमेटस में हमने देखा कि केराटिन वाला पोर्शन आ जाएगा. ग्रैन्युलोमेटस में हमने देखा कि सेल्स जो होंगे ना वो वही के वही रहेंगे, खाली ग्रैन्युलोमेटस सेल्स दिखेंगे हमको और हाईलाइन क्रिस्टल्स भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे टाइप्स. फिर आता है उसके क्लिनिकल फीचर्स. तो डेकेड, फिर एज, वो लोग बता रहे हैं कि 32 के आजू बाजू होगा, मेल्स ग्रेटर देन फीमेल. फिर पेन नहीं होगा, फिर कभी कभार पैरासिसिया होता है, स्वेलिंग होगा, फेशियल एसिमेट्री होगा. ठीक है, वो सब आपको लिखना है. मूवमेंट ऑफ मैंडिबल इज रिस्ट्रिक्टेड. फिर क्या होगा, आपको रेडियोग्राफिक फीचर्स बताना है. तो उसमें आप देखोगे कि हनीकॉम्ब अपीयरेंस दिखेगा, मल्टीलोक्यूलर होगा, बोन की जो डेंसिटी होगी जहां इन्वॉल्व नहीं होगा वो थिन, कॉर्टिकल प्लेट डेंस होगी, थिक होगी. ठीक है, तो ये एक्सेल क्रैकिंग जैसा दिखेगा. कभी कभार वो यूनिलोक्यूलर नहीं होता है, मल्टीलोक्यूलर
होता है। तो ऐसे आपको रेडियोलॉजिक या क्लिनिकल फीचर्स दोनों एक साथ एक से वो लिख देना है। ठीक है, फिर आएगा ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, कंप्लीट रिमूवल आप लिखते हो तो भी चल जाएगा। सर्जरी के टाइम देखना है कि आपको कोई ये पैथोलॉजिक फ्रैक्चर ना हो जाए, वाइटल स्ट्रक्चर को बचाना है, ऐसे उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो एम्ब्लोब्लास्टोमा जो मैंने अभी ये ब्लैंक पीडीएफ में बताया ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। इतना काफी है 7 मार्क के लिए, 15-20 मिनट आप लिख लोगे, लेकिन डायग्राम अच्छे ड्रॉ करने हैं, अच्छे रिप्रेजेंट करना है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एम्ब्लोब्लास्टोमा में कोई डाउट हो आपको तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में ये आने ही वाला है। 1 तारीख को जब एग्जाम होगी तब ये क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिनोमेटोइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। तो हमारे दोस्त या सीनियर्स क्या करते थे, एक खाली एम्ब्लोब्लास्टोमा कर लेते थे, ये क्वेश्चन आए तो भी वही लिखना, कुछ भी ट्यूमर का क्वेश्चन आए तो वही लिख देना है। खाली ये टाइटल जो है एम्ब्लोब्लास्टोमा का वो खाली बदल देना है। ये शॉर्टकट है, अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है तो कुछ नहीं लिखो, उससे तो अच्छा है कि कुछ लिखा हो, डायग्राम ड्रॉ किया हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और आपकी पहली ही स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आपको ऑल क्वेश्चंस टू बी attempted. You have to attempt all the questions for passing, even if you know or if you don't. Now, adenomatoid odontogenic tumor. Other names: adenoameloblastoma, ameloblastomic adenomatoid tumor. It is very uncommon, well circumscribed odontogenic neoplasm. Okay, what is the characteristics? Here, adeno means salivary gland. So here there will be duct-like structures. तो आप ऐसे समझो कि एमिलोब्लास्टोमा है और उसमें थोड़ा डक्ट जैसा पोर्शन दिख रहा है, तो वो होगा हमारा एडिनोमेटोइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, एडिनोमेटोइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स है, उसमें क्या आएगा, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स आएगा और नियोप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे। यही उसका मोरल ऑफ द स्टोरी है या मेन सेंटेंस है। अब क्लिनिकल फीचर्स, तो यंगर एज में होगा, फीमेल्स ज्यादा अफेक्ट होगी, मैक्सिलरी एंटीरियर में होगा। एमिलोब्लास्टोमा कहाँ होता था, मैंडिबुलर पोस्टीरियर, ये उसका दुश्मन है मैक्सिलरी एंटीरियर। फिर ट्यूमर कैसा होगा, तो उसकी तरह ही होगा जैसा एमिलोब्लास्टोमा था, स्लो एनलार्जिंग बोनी हार्ट स्वेलिंग। कभी कभार वो प्रीमोलर में पाया जाता है। ये सेम सेंटेंस आप लिख सकते हो, टूथ को हिला देगा, मोबिलिटी कर देगा। तो कुछ कॉमन चीज होती है वो तो आपको याद होनी चाहिए कि ट्यूमर्स में ये सब होता है। अब हिस्टोपैथोलॉजी के लिए क्या आएगा, तो डक्ट लाइक पैटर्न्स आएगी। ठीक है, ओडोंटोजेनिक एपिथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और कभी कभार हमको ये लगेगा कि वो सलाइवरी ग्लैंड जैसा लीजन है। तो ये सब आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताना है, डक्ट वाले स्ट्रक्चर्स और सलाइवरी ग्लैंड वाले जो लीजनों के ऐसे दिखना चाहिए। जो भी डक्ट का स्ट्रक्चर है ना, उसके पेरिफेरी में टॉल कॉलमनर सेल्स होंगे। तो आया ना उसकी तरह ही, उसमें आइलैंड्स थे, उसके बाजू में टॉल कॉलमनर सेल्स थे, यहाँ पे बीच में डक्ट थी। ठीक है, तो डक्ट ऐसी होगी, उसके बाजू में ये टॉल कॉलमनर सेल्स लिखना है। ठीक है, और ल्यूमेन के अंदर यहाँ पे इसके अंदर इयोसिनोफिलिक कोएगुलम आएगा। ठीक है, कभी कभार कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो आप अभी देख रहे हो यहाँ तक, उसको आपको डायग्राम में खाली लिख देना है। अगर आप खाली डायग्राम ड्रॉ करते हो एग्जाम में और लिखते नहीं हो हिस्टोपैथोलॉजी में, तो भी अच्छी बात है। ठीक है, अब आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डेंटिजरस सिस्ट, ओडोंटोम्स, यूनिसिस्टिक एमिलोब्लास्टोमा, सीईओटी और सीओसी। ये पिनबॉक ट्यूमर,
ये गॉर्लिन सिस्ट, ठीक है। ये सब उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। और ट्रीटमेंट तो उसको कंप्लीटली निकाल देना है, सर्जिकल इन्यूक्लिएशन। अब नेक्स्ट आता है पिनबॉर्ग ट्यूमर। ये भी उसका भाई बहन ही है। क्या है, वो एग्रेसिव है, ठीक है। दूसरा नाम है कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ऑडोजेनिक ट्यूमर। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल गया कुछ कैल्सिफाइड होने वाला है, ठीक है। अब क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, तो ऐसे बता रहे हैं कि स्ट्रेटम इंटरमीडियम लेयर है ना, उसके अंदर जो रेमनेंट होंगे सेल्स के, वहां से ये होता है, ठीक है। कुछ लोग बता रहे हैं कि वो प्रिमिटिव डेंटल लेमिना से हो रहा है। तो आपको तो यहाँ खाली दो चीज याद रखनी है कि वो प्रिमिटिव डेंटल लेमिना में से ओरिजिनेट हो रहा है या तो फिर स्टेलेट रेटिकुलम में से ओरिजिनेट हो रहा है। तो आपका दूसरा पॉइंट बना ओरिजिन। फिर उसकी एग्जैक्ट इटियोलॉजी वो अभी तक हमको पता नहीं चली है, इसलिए एनिग्मेटिक लिखा है। क्लिनिकल फीचर्स तो वही के वही आपको लिखना है। मिडिल एज्ड पर्सन्स, मैंडिबल ज्यादा है, मोलर रीजन में होगा, उसके बाद प्रीमोलर में आएगा वो। स्लो एनलार्जिंग पेनलेस स्वेलिंग, जो हमने लिखा ना एम्ब्लोब्लास्टोम में, वही आपको लिख देना है। स्वेलिंग भी उसी टाइप का होगा, पेन भी होगा, पेरिस। तो आपने देखा तो ये सारे क्वेश्चंस में एक ही टाइप का क्लिनिकल फीचर आ रहा है। हिस्टोपैथोलॉजी में थोड़ा चेंज आ जाएगा, इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगा कनेक्टिव टिश्यू ट्रॉमा में, इसमें इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होगा, ओवल शेप न्यूक्लियाई होगा और इंट्रासेलुलर ब्रिजेस होगी प्रोमिनेंट, ठीक है। होमोजेनस मटेरियल भी होगा एमेलोइड मटेरियल जैसा। तो ये मैं जितना भी सर्कल कर रहा हूँ ये चीज, वो आपको डायग्राम में बता देना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और हमने बताया नाम के हिसाब से ही उसमें कैल्सिफाइड मास होंगे हिस्टोपैथोलॉजी में, बस ट्यूमर सेल्स के आजू बाजू कैल्सिफाइड मास होंगे और कभी कभार लाइसकैंग रिंग्स भी होगी। तो आप जब ये डायग्राम ड्रॉ करते हो तो यहाँ बता दीजिए कि ये कैल्सिफाइड मास है, ये लाइसकैंग रिंग्स है, ये है इओसिनोफिलिक कोएगुलम, ऐसे करके आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है। इसकी ट्रीटमेंट क्या आएगी तो उसको भी निकालना पड़ता है। ओडोंटोम, ठीक है, हमने तो बता दिया था जब हमने डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस कर दिया ना, तब ये बढ़ा दिया था। जब टूथ बनता है तब क्या होता है, टूथ को बर्ड को इनेमल ऑर्गन को गलत मैसेज आता है, टूथ बनने की बजाय कुछ अलग मास बन जाता है। अगर वो टूथ की तरह दिखता है तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड ओडोंटोमा, टूथ की तरह दिखता नहीं तो वो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा, ठीक है, एबनॉर्मल मास। अब ओडोंटोमा की डेफिनेशन क्या है, तो वो हेमाटोमा है। हेमाटोमा का मतलब जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीनों में से ये बनता है ट्यूमर हेमाटोमाटोमा, इसलिए उसको बोलते हैं हेमाटोमा। हमको पता नहीं कहाँ से बना हो, और वो दोनों एपिथेलियल और मेसेनकाइमल, जैसे बताए ना, एपिथेलियल और मेसेनकाइमल दोनों कंपोनेंट्स को कंटेन करेगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा तो मैंने पहले ही बता दिया, स्ट्रक्चर टूथ के जैसा नहीं होगा, उसमें इनेमल भी होगा, डेंटिन और सीमेंटम भी होगा, जो ठीक से डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ होगा। अगर ठीक से डिफ्रेंशिएट होता तो वो टूथ बन जाता, ठीक से नहीं हुआ इसलिए तो उसको ओडोंटोमा बोलते हैं। लेकिन अगर टूथ के जैसा दिखता है तो बोलते हैं कंपाउंड ओडोंटोमा, टूथ के जैसा दिखता नहीं तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ओडोंटोमा। अब कंपाउंड ओडोंटोमा क्या है, तो टूथ के जैसा दिखेगा, बेनाइन है, और उसका टूथ के जैसा दिखना है, कभी कभार वो टूथ जैसा ही लगेगा, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, दोनों जेंडर में सेम है लेकिन मेल में ज्यादा,
मैक्सिला में ज्यादा होता है मैंडिबल से, ठीक है, और पेरिकोरोनल एरिया ऑफ परमानेंट टीथ में पाया जाता है। अब ओडोंटोमा क्या करता है, तो हमको लार्ज बोनी हार्ड स्वेलिंग ऑफ जॉ दिखता है, कभी कभार प्लेट्स को एक्सपांड कर देता है और डिस्प्लेस कर देता है, तो उसकी तरह ही क्लिनिकल फीचर लिखना है। ये सेंटेंस तो कोई भी ट्यूमर हो ना ओडोंटोजेनिक, इसमें रिपीट ही होगा। कभी कभार टूथ के अंदर जो एल्वियोलस होगा उसके ऊपर होगा, तो क्या होगा, वो नीचे के बोन को रिजॉर्व कर देगा और उसके कारण पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और अल्सरेशन भी हो सकता है। अगर ओडोंटोमा टूथ के सरफेस के ऊपर होता है तब जाके ये प्रॉब्लम होगा। अब उसकी हिस्टोपैथोलॉजी, तो आपको टूथ वाला ही पोर्शन दिखाना है। अगर फुली डेवलप्ड कंपाउंड है तो टूथ जैसा दिखेगा, इनेमल, डेंटिन और सीमेंटम वही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लिखा है ना यहाँ पे, वो आपको सब डायग्राम में ड्रॉ करके लिखना है और डायग्राम भी अच्छी तरह से याद रखना है, एग्जाम में लिखने को काम आएगा। और कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें इनेमल, डेंटिन, सीमेंटम ठीक से दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यही उसकी हिस्टोपैथोलॉजी है। ये जितना पैराग्राफ है ना, उसको आपको 2-3 लाइन में ही कर देना है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करके बताइए, 2-3 लाइन में ही शॉर्ट में करके बता दीजिए कि ये इतने इतने पार्ट्स होंगे, इतने हिस्टोपैथोलॉजी दिखेगी। ट्रीटमेंट आएगी सर्जिकल इन्यूक्लिएशन, ठीक है। तो गाइस, आज हमने 4 क्वेश्चंस पढ़े, एमेलोब्लास्टोमा, एडिनोमेटल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, पिनबॉब ट्यूमर और ओडोंटोमा। चारों इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम 10 मार्क्स का हमने पढ़ा दिया आज। आप अपनी तरह से ये जो पीडीएफ भेजेंगे वो आराम से उसमें से नोट बनाइए, नोट नहीं बनाते तो इसमें से रट लीजिए। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, आपको अभी से ही चालू कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपको ये प्रिपरेशन हो जाए। आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए, थोड़ा लिखकर हमको बोलिए कि सर ये मैंने नोट्स बनाई है। अगर हमको कोई चेंजेस लगा तो हम आपको बोल देंगे। आप हमको कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, हम आपको आराम से समझा देंगे। तो आज के टॉपिक में कोई आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कैसे लिखे, कैसे याद रखें या फिर से समझ ना हो, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, आप ये टॉपिक फिर से रिवाइज करवा देंगे। तो गाइस, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहे हो आप अभी, ये हमारी एकेडमी का नाम है, हमारी ये वेबसाइट है। वेबसाइट में सारा स्टफ है, स्टडी मटेरियल्स है, सारी डेंटल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होती है, ऐसे ही नीट एमडीएस का जो टेस्ट है होता है, ऐसे ही हमने ऑनलाइन वो पैटर्न रख दिया है। तो गाइस, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। आपको खाली वेबसाइट पर जाना है और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, रजिस्टर करके मेनू होगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। सारी टेस्ट सीरीज, सारा स्टफ मिल जाएगा, हमारा एप्लीकेशन सून बन जाएगा, अभी वो प्रोसेस में है। अगर आपको कोई भी डेंटल सब्जेक्ट या डेंटल एग्जाम्स की तैयारी करनी हो तो आप हमको कांटेक्ट कीजिए। आप हमारे वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको बुक्स पढ़ने में दिक्कत है तो हमारे वीडियोस देखकर भी आप एग्जाम पास कर सकते हो। So guys, please like and subscribe our channel. If you have not pressed the bell icon, please press the bell icon so that you will be receiving notifications of upcoming videos. It is a very handy lecture for today and useful for you to pass oral pathology, oral medicine also in the final year BDS and all the competitive exams related to dental. Have a nice time guys. Bye bye.